Okay, so since in previous classes we have studied about different types and properties of signals and systems and their verification or find out which type of signal and which types of system from various kind of numerical equation as well as different operations like convolutions, total response, and response of the signal. So today I will switch to the very next topic, that is Z transform. Just a minute. Z transform. Z transform. Is it visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So first of all, since that term Z transform consists of two terms, that is first one is Z, another one is transform. So we have to know what do you mean by Z transform. So first of all, we know that transform means it is conversion from one type of form to another type of form. So in Z transform also it is the conversion of one type of signal or one type of system to another type of signal or system. And Z indicates the plane. We know that every graph has two planes, that 2D graph, that is x and y plane. So in this case we will use Z plane. So first of all we have to know what do you mean by Z plane. Okay, so in previous classes we plotted different type of characteristics of different type of signals like continuous time signal, discrete time signal. To tell me what x axis indicated, x axis के थ्रू हम लोग क्या इंडिकेट करवाते थे? एक्स एक्सिस के थ्रू हम लोग क्या इंडिकेट करवाते थे? सर टाइम को Good. Time for continuous and sample for discrete. That is for continuous and that is for discrete. Now y axis के through y axis what we indicated? सर वैसी चीज हाँ, कौन सा? सर मतलब उसके उसके थ्रू हम लोग वो सब जैसे एम्पलीट्यूड या कुछ भी मतलब जो कि डिसकंटिन्यू है या फिर जो वैरी करेगा उसको हम लोग वहां लिख कुछ ऐसा कुछ इंडिकेट करते थे क्या नहीं सिग्नल का? Amplitude, that is the value. Okay, yes or no? यस सर यस सर So now question is अब प्लेट z प्लेन के थ्रू हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे? सो हम लोग जानते हैं एक सिग्नल का कोई भी डिस्क्रीट हो या कंटिन्यूअस हो, द मेन पार्ट ऑफ सिग्नल कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज. First one is time or sample, number of samples. Second one is amplitude and third one is frequency. Frequency. Okay, so now बाकी क्या रहा हमारा? Frequency. So we are going to determine the frequency or we are going to represent the signal in terms of frequency instead of time or sample or amplitude. Number of time or number of samples or amplitude. So the signal which can be transformed or can be represented in frequency parameter instead of time or number of sample and amplitude, then this transformation is known as Z transform. Got it? Got it? I will tell once more.
Are you getting, or I will repeat it? Sir, please repeat once. Okay. So टिल नाउ, ठीक है, हम लोगों को क्या पता था कि हम लोग सिग्नल को, या सिग्नल चाहे वो कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल हो या डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हो, व्हाट एवर द सिग्नल इट इज, we will represent it through the time scale where amplitude will be determined by y-axis and time and number of sample in case of discrete, and time will in case of continuous time signal can be represented by x-axis till now. Okay, now we are going to represent that entire signal in another plane. Like till now we were doing our offline classes where we were sitting in the classrooms, that is the physical plane. Okay, now we are shifted to the another plane, that is online, where parameters are different. So that is transform. And now in that time, in the case of signal, also we are going to represent the signal in frequency plane. मतलब हम लोग सिग्नल को फ्रीक्वेंसी प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज नोन एज जेड प्लेन. Okay, then that signal, then that transformation is known as Z transform. That is the way through which we can convert, or we can represent a signal in frequency domain or in Z plane instead of time plane. Okay, or time scale. दैट मीन्स ये जो है ये टाइम डोमेन है, यहाँ पे मेरा टाइम एक मैटर कर रहा है, एक्स वाई प्लेन जो है दैट इज टाइम डोमेन. टाइम डोमेन, यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, x इज रिप्रेजेंटिंग टाइम एक्सिस और नंबर ऑफ सैंपल, and y represents the amplitude of the signal. So this plane is known as time domain. Now मैं ये टाइम डोमेन में अब रिप्रेजेंट नहीं करूंगा, I will switch to frequency domain. Frequency domain. And now that frequency domain also has some axis, and which is denoted by z plane, or which is represented by z plane. And the transformation technique through which we are going to transform the signal from time domain to frequency domain is Z transform, or other transforms are there, but now we will study about Z transform. Actually, to convert a signal from time domain to frequency domain, there are three major processes. Okay, first one is Laplace transform. Second one is Fourier transform. And third one is Z transform. Among these, Z transform is the easiest one, so I will selected it, or I will teach it in the very first. And my tendency to give the lecture on Laplace transform and Fourier transform in physical mode. So now I am concentrated on Z transform because this is the most easiest transformation. Okay, so we will now consider on Z transform only. Okay, got it? So can I switch to the next slide? Sir. Okay. Yes, sir. Okay. So now we know what do you mean by Z plane. We know what do you mean by transform. Now Z transform, to transform any signal from a Z transform, we need a parameter with the help of which we can transform the signal from one domain to another domain, and that parameter is nothing but the mathematical equation. Okay, like if
I will give you any mathematical problem. Like I am saying that मेरा क्लास 2 घंटे के लिए चलता है, ठीक है, हफ्ते में 7 दिन चलता है. So now calculate this in algebraic form. So we need an equation. Okay, so now Z transform, to transform any signal into Z plane, we also have numerical equation through which we can transform a signal from time domain to frequency domain, and that equation is known as equation of Z transform. Okay, just a minute, that is, we have some equations. So for very first of all, we have signals. Without signal we can't convert it or we can't transform it. So very first we have to take a signal, and we all know that signal is classified into two categories. That is, one is how many what are the categories of the signal? First one is continuous, and second one is discrete. Okay, continuous time signal and discrete time signal. So in continuous time signal we will apply Laplace as well as Fourier transform, and in discrete time signal we will apply Z transform. Okay, so in case of discrete time signal, mostly we will apply Z transform, and continuous time signal, mostly we will apply Laplace transform along with Fourier transform to convert the signal into its corresponding your time domain to frequency domain. ठीक है. You can also apply for Laplace transform or Fourier transform in discrete signal also, and that will be that part we will study in our later on session. But mostly we will use Z transform in case of discrete and Laplace and Fourier transform in continuous time signal. And I can also write, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि बाद में तुम लोगों को confusion ना हो. Laplace Z transform and Fourier transform also can be applied on Z discrete signal also, but mostly in general, that is popular one. So to convert any signal, okay, any signal to its corresponding frequency domain from its time domain signal, we need a equation, and in case of Z transform, that equation is known as equation of Z transform. So the equation of Z transform, first we have to see this equation of Z transform, and you have to remember this equation of Z transform. So it indicates, यहाँ पे देखो, जब मैं किसी भी सिग्नल को टाइम डोमेन में रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है, हाउ आई विल एक्सप्लेन रिप्रेजेंट दिस x of t, yes or no? यस सर. जब मैं उसको डिस्क्रीट में मतलब सैम्पलिंग में रिप्रेजेंट कर रहा था, वी विल गिव x of n, yes or no? यस सर. नाउ मेरा डोमेन है z ट्रांसफॉर्म, सो वी विल यूज x of z, दैट इज द फंक्शन ऑफ z ट्रांसफॉर्म, x of z इक्वल टू समेशन, मैं डिस्क्रीट में यूज करूंगा माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी x of n, since discrete, x of n z to the power minus n. That is the formula of Z transform. Z transform. Okay. Now the Z can be represented. Z यहाँ पे क्या है? Complex variable. Complex variable because frequency is there. एंड जहां पे मेरा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वहां पे मेरा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल आएगा, लाइक 2 पाई ओमेगा रेडियन, ठीक है, ओमेगा सम फेजेस विल बी देयर, सो z is taken as complex variable and it can be represented
R e j omega, where R is the real number and e to the power j omega is the imaginary one, imaginary number. As we know that complex number or complex variable is the combination of real and imaginary numbers. Okay, so that is denoted by this. Now, if I will put the value of z in this equation, then what I will write? E to the power j omega instead of z, wherever z is there, just put r e to the power j omega. N equal to minus infinity to plus infinity, x of n r e to the power j omega minus n. Okay, now if I will simplify this, minus infinity to plus infinity, x of n r to the power minus n e to the power minus j omega n. This is the simplified or expanded version of Z transform equation. Okay, got it? Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Instead of z, you have to put r e to the power j omega and just put the value of z in the equation. That is here x of z is there, so I will write x of r e to the power j omega. And x of n into z to the power minus n, instead of z, I am writing r e to the power j omega. So the equation can be expanded like this. Okay. Now, look at that limit n equal to minus infinity to plus infinity. So, as we know that the scale is denoted by this. This is minus infinity, that is infinity, and this is 0. So, in Z transform also there is the limitation, that is minus infinity to plus infinity, and it will be started from 0. So now if n started from 0 to infinity, then we will say the entire signal will lie in between this side, that is positive axis, in line is lying between positive axis. So in that case we will say x of plus z, that is the terminology, x of plus z, that means only positive axis has the value x of plus z, and this is denoted by n equal to n का value अब क्या है, instead of minus infinity to plus infinity, n value is from 0 to infinity, and rest of the equation will remain same, z to the power minus n. Okay, and this is known as, since ये मेरे कौन से हाथ में है, राइट हैंड में है, so this is known as right hand equation, right hand equation of z transform. And if the entire Z transform will lie in this side, that is negative, that is 0 to minus infinity, that is n tends to 0 minus infinity to 0, then it can be denoted by minus x minus z. That means this side x of minus z, and it is expressed by the equation minus infinity to 0 x of n z to the power minus n, and this is known as left hand equation for z transform.
So simply if we combine this x plus z and x minus z, we will get x of z. X of z equal to x plus z plus x of minus z. So this is the expandation, that is the elaboration of equation of z transform. That is, if in question they will ask find out the right hand side equation for z transform, so we will only work from n equal to 0 to infinity. And if the question will ask me to find out the left hand equation, then we will do the calculation on the basis of the range of n from minus infinity to 0. Okay, and by combining of these two we will get x of z. Okay, so until and unless question will ask itself to find out right hand side or left hand side equation, we will not going through this. This is only for our knowledge, that is x plus z and x minus z. X plus z means all the value, all the signal will lie in between 0 to infinity, that is positive side. X minus z means all the value will lie between 0 to minus infinity, that is negative side of the plane. Okay, next is, since frequency term is there, ठीक है, तो frequency term अगर होगा तो वहां पे मैं, अगर मैं फ्रीक्वेंसी का टर्म आएगा तो मेरा पास देखोगे, मैं अगर बोलूंगा वॉल्यूम, ठीक है, टेलीविजन का वॉल्यूम, दैट इज डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी, दैट इज ऑडियो फ्रीक्वेंसी. whatever volume of my voice is there, that is also depending upon the frequency. तो जहां पे मेरा फ्रीक्वेंसी है वहां पे मेरा एक फ्रीक्वेंसी बैंड है. यस और नो, बैंडविड्थ है कि मैं एक लोएस्ट वॉल्यूम है, मेरा एक हाई वॉल्यूम है. टेलीविजन का लोएस्ट साउंड है, एक हाई साउंड है. ये तुम जहां पे फ्रीक्वेंसी है वहीं पे मिलेगा. टाइम में, टाइम डोमेन में मैक्सिम तुम्हारा बैंडविड्थ का कॉन्सेप्ट उतना पॉपुलर है नहीं, क्योंकि मैं नहीं बोल सकता हूँ कि एक मिनिमम टाइम और मैक्सिमम टाइम. एक सिग्नल 0 टाइम से स्टार्ट हो रहा है और उसका जस्ट अ मिनट. Okay, am I audible? Hello, am I audible? Yes, sir. Okay. Actually, there is a disconnection. Okay. So just a minute. I'll share the screen. Okay. Hope the screen is visible. Is the screen visible? Yes, sir. Okay. So tell me, since there is a frequency, we have a minimum frequency and a maximum frequency, and the entire signal will lie between that minimum and maximum.
So tell me, what do you mean by bandwidth, and what is the concept about bandwidth? Tell me. I am not asking for the exact answer, but I am asking for what do you think about bandwidth. Sir, basically bandwidth is a type of range or the limit which we have been provided that if we are calculating any mathematical function, then we have to check the limit that what will be the value from lowest to the maximum. Mathematical function. Or sir, as you have already mentioned Sir, that we are putting the limit of 0 to infinity, that means we have the bandwidth of lowest to 0 and maximum to the infinity. Okay. Any other? Has any other view on bandwidth? का मैक्सिमम सिग्नल का मैक्सिमम पोर्शन जिस फ्रीक्वेंसी रेंज में लाई करता हो. That is okay. That is, instead of using any mathematical equation, just say that the maximum in between the maximum and minimum frequency in which the signal will lie. सपोज मेरा मैक्सिमम बैंडविथ है व्हिस्परिंग, सॉरी मिनिमम बैंडविथ है व्हिस्परिंग, एंड मैक्सिमम बैंडविथ है मैं जब ज्यादा चिल्लाता हूँ, ठीक है? तो जो भी मैं सिग्नल तुम लोग को डिलीवर करूंगा इन बिटवीन दैट पर्टिकुलर रेंज, गॉट इट? मैं अगर एकदम मन ही मन बात करूंगा तो ऑब्वियसली यू विल नॉट गेट दैट वॉइस, और अगर मैं अपना टोन से भी ज्यादा बात करने जाऊंगा तो व्हाट हैपन, माय थ्रोट विल बी चोक. सो whatever the signal is lying in the range that is in between minimum and maximum frequency, so that is known as bandwidth. Band means हम लोग हेयर बैंड यूज करते हैं, ठीक है? हेयर बैंड क्या है? पर्टिकुलर रेंज में वो क्या करता है, हेयर को बाइंड करके रखता है, उससे बाहर जाने नहीं देता. सो दैट इज बैंड. विद मतलब, विद मीन्स दैट इज इसका जो है रेंज. एक मिनट, विद जो होता है दैट इज रेंज. ये रेंज, ये जो है इसका विद, दैट इज इसका रेंज. सो बैंडविथ मतलब सिग्नल को वो मिनिमम और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में बांध के रखेगा, उससे बाहर उसको जाने नहीं देगा, ठीक है? सो नाउ तुम्हारा सिंस Z transform be related to frequency, that means it is the representation of the, I am changing the slide, huh? It is the representation of the signal in frequency domain instead of time domain. So frequency domain में हम लोग देखे हैं Z transform, in case of Z transform, Z is simply R e to the power j omega, where R is the real real number, and this portion is imaginary one. So, and whenever we are going to plot any signal in a plane, okay, we are using two axes. One resembles to x axis and another one resembles to y axis. So, in case of Z transform, we also represent the signal in two axes. So, this entire plane is known as Z plane, and in Z plane these two axes, x axis represent the real value, that is r, and y axis represent the imaginary value, that is e to the power j omega. Now since Z transform is totally related to the frequency domain, so that we can say it has particular range, बिकॉज फ्रीक्वेंसी जहां पे है वहां पे तुमको रेंज लाना ही पड़ेगा, ठीक है? एंड दैट रेंज इज नोन एज रीजन ऑफ कन्वर्जेंस. कन्वर्जेंस, और सिंपली इन शॉर्ट आरओसी, कि इस रीजन के अंदर जो सिग्नल है कन्वर्ज करेगा. सो टेल मी, व्हाट डू यू मीन बाय कन्वर्ज? एनीवन? कन्वर्ज का मतलब क्या है?
बोलो, कन्वर्ज कहां पे करेगा? कन्वर्ज का मतलब क्या है? एनी आइडिया? सर कन्वर्ज मतलब तो होता है एक जगह आके मिलना, मतलब एक ही जगह पे। हाँ, दैट इज आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जहां पे तुम सब लोग फैकल्टी से मिलते हो, ठीक है, सब स्टूडेंट एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हो, मिलते हो, एक पॉइंट, दैट इज अभी इन दिस टाइम वी आर कन्वर्ज, वी आर गोइंग टू कन्वर्ज इन टीचमेंट ऐप, कि यहाँ टीचमेंट ऐप में मिलते हैं। तो हमें जेड ट्रांसफॉर्म में भी एक रेंज है, मतलब यहाँ पे एक जेड ट्रांसफॉर्म का एक्सिस है, ठीक है, इसका एक पर्टिकुलर रेंज है, जिस रेंज पे मेरा सारा सिग्नल इस प्लेन में मिलता है, दैट इज ऑल सिग्नल्स आर मीटिंग इनसाइड दैट रेंज ओनली। इस रेंज के बाहर अगर चले जाएंगे तो वो सिग्नल मिल नहीं पाएगा, ठीक है, सो आई विल नॉट गेट दैट सिग्नल। सो रीजनल कन्वर्जेंस इज लाइक दिस, अ सर्कुलर फॉर्म, ठीक है, और इस सर्कुलर फॉर्म के अंदर ही मेरा सब जो सिग्नल है मिलेगा, उससे बाहर मुझे सिग्नल नहीं मिलेगा, दिस इज आउट ऑफ बाउंडेशन, दिस इज आउट ऑफ बाउंडेशन। कुछ सिग्नल के लिए ये भी हो सकता है कि ये आउट ऑफ बाउंडेशन है, इस फ्रीक्वेंसी रेंज के बाहर जो सिग्नल है वो सब मिलेगा, सो दैट इज नोन एज रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। कुछ सिग्नल के लिए रिंग के अंदर आरओसी होता है, कुछ सिग्नल के लिए रिंग के बाहर आरओसी होता है, सो वी विल फाइंड दिस by using calculating the particular ROC of the signal. Obviously, in next class we will discuss about that this, but in this class we are going to give you the concept of ROC. So, since ROC is the particular range in where the signal, all the signal meet with each other, so it has some properties, and that properties will be asked in exam. Okay, so now we are going to see what are the properties, ROC properties, and next class we will going to find out the ROC of the particular signal. Okay, so first of all see the diagram, the ROC, ठीक है, आरओसी जहां पे है वहां पे एक रिंग का कॉन्सेप्ट है, एक सर्कल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, सो यहां पे क्या लिखेंगे, दैट आरओसी हैज अ रिंग और डिस्क in Z plane centered at origin। देखो ये जो डिस्क है या रिंग है, ये ओरिजिन को सेंटर्ड करके बना हुआ है, ठीक है, ये नहीं कि यहाँ पे एक रिंग बना हुआ है या यहाँ पे एक रिंग बना है, जो भी रिंग बनेगा, चाहे वो रिंग के अंदर आरओसी हो या रिंग के बाहर आरओसी हो, दैट विल बी ऑब्वियसली सेंटर्ड एट ओरिजिन। ओके, नेक्स्ट इज टू, आरओसी doesn't contain any poles, that means poles and zero का concept यहाँ पे लगेगा, so we will find it। So what do you mean by poles and what do you mean by zero? So poles always denoted by cross and zero always denoted by zero, ठीक है, so now we in later on class we will calculate the poles and the zero of the signal। Third part is, if x of n is a finite causal sequence, then ROC everywhere in Z plane except
z इक्वल टू 0। दैट मीन्स z इक्वल टू 0 को छोड़ के बाकी पूरा z प्लेन में मेरा आरओसी मिलेगा जब x ऑफ n फाइनाइट सीक्वेंस रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, if x of n is finite anti-causal sequence, then ROC everywhere except z इक्वल टू इंफिनिटी। मतलब इंफिनिटी के अंदर इंफिनिटी नहीं होगा, उसके बाद उसके छोड़ के बाकी सब में, दैट मीन्स ROC will be finite also। Fifth point, if x of z is finite two-sided sequence, that means minus infinity to plus infinity लगेगा, then ROC will be everywhere except, दोनों को कंबाइन कर दो, z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू इंफिनिटी। दैट मीन्स फाइनाइट रहेगा आरओसी का वैल्यू, एंड तुम्हारा z इक्वल टू 0 को छोड़ के फाइनाइट रेंज में कहीं पे भी आरओसी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सिक्स, आरओसी मस्ट बी अ connected region, that's why all the signals will meet at that region, connected region। that means ये नहीं कि आरओसी यहाँ पे आरओसी इस पॉइंट पे है, फिर इस पॉइंट पे होगा, फिर इस पॉइंट पे होगा, फिर इस पॉइंट पे होगा, नहीं। आरओसी जो है आइदर तुम्हारा ये सर्कल के अंदर होगा, दैट इज ऑल द पॉइंट्स इनसाइड द सर्कल आर कनेक्टेड, और सर्कल के बाहर होगा जहां पे ऑल द पॉइंट विल बी कनेक्टेड। Okay, so ROC must be a connected region. Otherwise, we can't say the signal has ROC. Okay, all are getting the properties of ROC, because after that we will take an example and do the Z transform of the particular sequence. And in next class, we will calculate the ROC of that particular sequence, and further we will move to the properties of Z transform. So till now, do you understand what are the properties of ROC? Any doubts regarding ROC properties or any doubts regarding this topic? Any doubt? सर एक बार आप प्लीज ब्रीफ में सारे पॉइंट को एक बार फिर से बता दीजिएगा क्या, मतलब From starting or ROC शॉर्ट में। properties? सर यही आरओसी प्रॉपर्टी को। देखो आरओसी क्या होता है, आरओसी होता है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। दैट मींस यहाँ पे क्या है, कन्वर्ज होगा सिग्नल, दूसरा क्या होगा, एक रीजन के अंदर होगा। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। सो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, रीजन जहां पे है वहां पे क्या है, एक बाउंड्री कंडीशन दे दिया जाता है। इफ आई विल से व्हाट इज योर रीजन, so obviously you will consider the range around your space। that means suppose you are now sitting the particular position of that room, okay, and your range is always centered at you, suppose this is your range। So if I will connect all these, it will give me us this। Got it? ये वाला पॉइंट समझ में आया, रीजन क्या यस सर होता आ है। गया। ठीक है, नाउ आरओसी यहाँ पे क्या है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, किसमें, जेड प्लेन पे। सो सिंस रीजन इज देयर, सो ऑब्वियसली देयर इज अ पर्टिकुलर रेंज, और जहां पे मेरा रेंज होता है इन द मोस्ट ऑफ केसेस इट विल टेकन एज सर्कुलर और रिंग। सो जेड प्लेन का आरओसी भी क्या होगा, एक रिंग या डिस्क होगा जिसका ओरिजिन होगा 0। दैट मींस यहाँ पे मेरा कोई पर्टिकुलर सिग्नल मैंने अभी तक दिया नहीं। ठीक है, सो टू अवॉइड द कंट्रोवर्सीज के तुम 1 ले सकते हो, मैं 2 ले सकता हूँ, कोई और 3 ले सकता है,
ठीक है, तो इसको अवॉइड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ओवरऑल जनरलाइज फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा। और जो सबसे जनरलाइज फॉर्मेट क्या है, टेकिंग ओरिजिन एट जीरो। सो जीरो को ओरिजिन रखते हुए मेरा जो रीजन है वो डिफाइन करेगा आरओसी को। So obviously this will look like a ring or a disc having the center at zero. Next is ROC does not contain any poles. That means poles, अगर हम सिग्नल का पोल्स देखेंगे तो देखो, एक सिग्नल को अगर हम डिवाइड करेंगे तो दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, दैट इज दिस इज अपर वर्जन एंड दिस इज लोअर वन। ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पार्ट, एंड वी विल डिस्कस अबाउट कैलकुलेशन ऑफ पोल्स एंड जीरो इन लेटर ऑन चैप्टर, बट for now you can understand that poles can be represented by cross and zeros can be represented by zero on the plane. ठीक है, so ROC will not contain any cross inside this region or any poles inside this region. Next is if x of n, if the given sequence is finite and causal sequence. So what do you mean by causal sequence? What do you mean by causal sequence? सर कॉजल सीक्वेंस नहीं पता सर, लेकिन कॉजल सिग्नल पता है। क्या होता है कॉजल सिग्नल? ही सीक्वेंस है, दैट इज सिग्नल को हम सीक्वेंस के हाँ रिप्रेजेंट सर। करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कॉजल सिग्नल? सर जिसमें सर कि मतलब मेरा पास्ट वैल्यू, मतलब इसमें सिर्फ मेरा पास्ट वैल्यू होता है, प्रेजेंट वैल्यू होता है, जिस जैसा सिग्नल जो कि फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता हो, तो वैसा सिग्नल को हम लोग कॉजल पास्ट वैल्यू, सिग्नल। दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड। गॉट इट? दैट यस मींस सर। जीरो से माइनस इंफिनिटी, सो लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस। तो उसके लिए मेरा आरओसी क्या होगा, इंटायर जेड प्लेन, जेड प्लेन में भी कहीं पे भी हो सकता है, बट एक्सेप्ट जेड इक्वल टू जीरो, इस पोर्शन को छोड़ के कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, अगर मेरा x ऑफ n इज फाइनाइट एंड एंटी कॉजल, एंटी कॉजल मींस उसी का उल्टा, दैट इज प्रेजेंट और फ्यूचर यस वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, पास्ट के ऊपर नहीं करेगा। कॉजल का ऑपोजिट ही एंटी है। ठीक है, किसी भी चीज का ऑपोजिट उसको एंटी बोलते हैं। सो अगर वो फाइनाइट और एंटी कॉजल रहेगा, दैट मींस जीरो एंड फ्यूचर वैल्यू, दैट मींस राइट हैंड साइड। सो यहां पे हम लिखेंगे राइट साइडेड, राइट साइडेड सीक्वेंस। तो क्या होगा, एंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट जेड इक्वल टू इंफिनिटी, मतलब हम लोग कह नहीं सकते कि इंफिनिटी पे कहीं पे उसका आरओसी है, उसका जो आरओसी होगा ऑब्वियसली इनसाइड द फाइनाइट वैल्यू। तो आरओसी कैन बी कैलकुलेटेड। अगर मैं बोलूंगा कि तुम्हारा क्लास होगा एक्सेप्ट इनफाइनाइट टाइम ड्यूरेशन, तो दैट मींस आई विल टेक द क्लास फॉर अ फाइनाइट टाइम ड्यूरेशन। यस और नो? यस सर। So that is the main statement of this point. Now fifth point is अगर मैं कंबाइन कर दूं बोथ को, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो ऑब्वियसली आरओसी विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल आरओसी ऑफ दिस टू साइडेड सीक्वेंसेस। तो लेफ्ट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड इक्वल टू टू हैंड साइड सीक्वेंस। सो टू हैंड साइड सीक्वेंस और टू साइडेड सीक्वेंस में आरओसी क्या होगा, एंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट जेड इक्वल टू जीरो एंड जेड इक्वल टू इंफिनिटी। मतलब ये जीरो के अलावा और इसका वैल्यू फाइनाइट रहेगा, कहीं पे भी आरओसी होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 तक समझ में आ गया? यस सर। नाउ पॉइंट नंबर 6, दैट इज कनेक्टेड रीजन। देखो, मैं अगर बोलूंगा तुम्हारा रीजन कौन सा है, दैट इज तुम यहाँ पे बैठे हो। ठीक है, ऑब्वियसली तुमको सेंटर करके चारों तरफ जो बेल्ट रहेगा वो तुम्हारा रीजन है, एंड एक एक रीजन का जो पॉइंट है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ये नहीं कि तुम यहाँ पे बैठे हो, तुम्हारा यहाँ का रीजन यहाँ है, दूसरा रीजन चला गया तुम्हारा इतना दूर, दूसरे एरिया पे चला गया, दूसरे रूम तक चला गया, तो ऑब्वियसली इट विल नॉट हैपन। The every point in around your region is connected with each other. So I can say ROC must be a connected region, because connected नहीं होता तो क्या होता, वो मेरा region नहीं होता।
ठीक है। अगर मैं Yes, बोलूंगा sir. तुम्हारा रीजन कौन सा है, तो तुम बोलोगे सर मैं यहाँ पे बैठा हूँ और इसके चारों ओर इस पॉइंट को छोड़ के फिर इधर मेरा रीजन है। सो आई कांट डिफाइन दिस, ये तुम्हारा रीजन डिफाइन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये दो पॉइंट देखो कनेक्टेड नहीं है और यहाँ से यहाँ तक कनेक्टेड नहीं है। सो आरओसी होने के लिए या आरओसी डिफाइन करने के लिए मुझे एक ऐसा रीजन चाहिए जिसके अंदर हर एक पॉइंट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कनेक्टेड रीजन। सो 6 पॉइंट समझ में आया? Yes, sir. आ गया. Thank you, sir. Okay, now we will going to give an example of a z transform, because मैं हम लोग क्या कर रहे थे, z ट्रांसफॉर्म में थे, और वहां से सिंस z ट्रांसफॉर्म एक फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन है, सो वहां पे मेरा बैंडविड्थ है, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, एंड जहां पे बैंडविड्थ है मेरा रीजन है, सो आरओसी का कॉन्सेप्ट आया। सो नाउ फॉर टुडे वी विल गोइंग टू find out the z transform of a sequence, only z transform, okay, of a sequence, and we will see how z transform can be obtained, and in next class we will finding out the ROC and later on process of z transform. So I am giving an example, or I am taking an example, x of n equal to 1 2 minus 1 2 3, and it is started from -1. Okay, so that means this is the zeroth position. Now we have to find out the z transform of x of. So now we know the equation of z transform is x of z equal to, this is both hand side equation, ठीक है? Yes or no? Yes, ये sir. क्योंकि यहाँ पे जीरो प्लस और ये माइनस, सो बोथ हैंड, सो आई विल राइट द इक्वेशन n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एक्स ऑफ n z टू द पावर माइनस n. Okay, now if I will put that equation और I will go through the sequence. Okay, so ये sequence का मिनिमम वैल्यू कहाँ पे है, -1 -2, दैट मीन्स n का जो रेंज है -2 से कहां तक जा रहा है, 1 2 +2 तक जा रहा है. सो x of z फॉर दिस पर्टिकुलर sequence can be denoted at -2 to +2 x of n z to the power -n. Now put that value of n. So इसका रेंज क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल x ऑफ -2 z टू द पावर -2 प्लस समेशन है x of -1 z to the power -1 plus x of 0 z to the power -0, obviously 0, plus x of 1 z to the power -1 plus x of 2 z to the power -2. So that is the expansion of this equation. समझ में आया कैसे सीक्वेंस को एक्सपैंड कर रहे हैं, जस्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ n -2 to 2. Got it? Yes or no? Just put that value x of n equal to -2 से 2 तक है, दैट मीन्स n का वैल्यू क्या है, -2 -1 0 1 2. समझ में आया यहां तक? Yes, sir. Okay, so now put that value in this equation, that is -2 -1 0 1 2, एंड z में भी तुम्हारा n टर्म है तो z में भी तुम n पुट करो, बट यहाँ पे माइनस है. सो नाउ द इक्वेशन विल बिकम x ऑफ -2 का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1. सो 1 इंटू z टू द पावर 2 प्लस x ऑफ -1 का वैल्यू क्या है, 2. 2 इंटू z टू द पावर 1 प्लस x ऑफ 0 का वैल्यू -1 है, z टू द पावर 0 ऑब्वियसली 1, प्लस तुम्हारा x ऑफ 1 का वैल्यू 2 है, z टू द पावर -1 प्लस x ऑफ 2 का वैल्यू 3 है, 3 टू द पावर z टू द पावर -2. तो एंटायर इक्वेशन z स्क्वायर प्लस 2z -1 प्लस 2z टू द पावर -1 प्लस 3z टू द पावर -2 x of z.
तो ये हो गया मेरा z ट्रांसफॉर्म, इसको हम कैपिटल लिखेंगे, ठीक है, इसको हो गया मेरा z ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे देखो एक ऐसा एक टर्म है जिसके साथ z का कोई रिलेशन नहीं है या इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ z है, वो कौन सा टर्म है? Yes, one. दैट इज वन, ठीक है। तो वन के साथ z का कोई रिलेशन नहीं है, तो वन इज नॉट द आरओसी। वन में मेरा z का कोई वैल्यू नहीं है। सो वन मेरा कहां पे है? z इक्वल टू जीरो पे है। देखो z इक्वल टू जीरो या एट द ओरिजिन है, इक्वल टू जीरो पे है। यस और नो? यस और नो? Yes, sir. ओके। एंड देखो और एक चीज Yes. देखो, z का जो वैल्यू है वो इन्फानाइट नहीं है, तुम्हारा -2 से +2 के रेंज में है। सो मैं ये कह सकता हूं कि इसका जो आरओसी है, ये मैं नेक्स्ट क्लास में ये करूंगा, अभी मैं जस्ट एनालाइज कर रहा हूं इस इक्वेशन का आंसर को। आरओसी है, दैट मींस जेड ये इक्वल टू जीरो पोजीशन में मेरा जेड का कोई वैल्यू है ही नहीं, जेड का कोई पैरामीटर है ही नहीं, तो वह अनअफेक्टेड रहेगा। तो आरओसी जो है z इक्वल टू जीरो एंड z इक्वल टू इंफिनिटी, मतलब यहाँ पे फाइनाइट वैल्यू है, दैट इज -2 टू +2 में मेरा रेंज लाई कर रहा है। सो ये दो को छोड़ के आरओसी रहेगा एंटायर z प्लेन, z प्लेन एक्सेप्ट z इक्वल टू जीरो एंड z इक्वल टू -इंफिनिटी। ठीक है, समझ में आया यहां तक सबको? समझ में आया? यस और नो? हेलो, हेलो, आर यू गेटिंग माय वॉइस? सर ये आप आरओसी क्या बताया था सर, प्लीज बता दीजिए। आरओसी देखो, आरओसी एक रीजन है जहां पे कन्वर्ज करेगा, सारे के सारे इक्वेशन कन्वर्ज करेगा। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि टीच मीन में अभी हम लोग कन्वर्ज किए हुए हैं। लाइक तुम एक जगह पे बैठे हो, ठीक है, तुम्हारा दोस्त एक जगह पे बैठा है, ऑल द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन देयर डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है, मैं खुद अलग एक जगह पे बैठा हुआ हूँ। तो हम लोग मीट कहाँ पे कर रहे हैं? टीच मीन पे मीट कर रहे हैं। ठीक है। सो क्लासरूम में क्या होता है, हम लोग मीट कहाँ पे करते हैं? क्लासरूम में मीट करते हैं। तो क्लासरूम में भी एक रीजन रहता है, दैट इज एक बाउंड्री कंडीशन रहता है, एक बाउंड्री के अंदर क्लासरूम रहता है। टीचमेंट भी एक बाउंड्री कंडीशन के अंदर है कि यहाँ पे नेट का स्पीड चाहिए, नेट चाहिए, ठीक है, यहाँ पे मेरा एक माइक्रोफोन चाहिए, यहाँ पे मेरा एक हेडफोन चाहिए, यहाँ पे एक मेरा एक डिस्प्ले चाहिए, ठीक है। सो दैट इज द बाउंड्री। सो आरओसी होता है तुम्हारा रीजन ऑफ कन्वर्जन। सो इस इक्वेशन को देखो, ये इक्वेशन में मैंने क्या किया कि मेरा एक सीक्वेंस दिया हुआ है। सो ये सीक्वेंस तो डिफरेंट सिग्नल्स है, दैट इज 1 2 -1 2 3, दीज आर द सिग्नल्स, दैट इज सिग्नल सीक्वेंस, दैट इज द वैल्यू ऑफ द सिग्नल। तो ये वैल्यू जो है, दैट मींस यहाँ पे देखो z के छोड़ के जो वैल्यू है दैट इज -1, यहाँ पे z के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो बाकी जितना भी मेरा वैल्यूज है वो कन्वर्ज कहां पे करेगा? एंटायर जेड प्लेन पे, दैट इज रेंजेस फ्रॉम -2 टू 2 एक्सेप्ट z इक्वल टू इंफिनिटी, के इंफिनिटी में मेरा कोई वैल्यू है ही नहीं यहाँ पे। तो इंफिनिटी को छोड़ के बाकी सब में लाई करेगा। और एक कहां पे लाई करेगा, लाई नहीं करेगा, दैट इज z इक्वल टू जीरो पे, क्योंकि z इक्वल टू जीरो इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द z पैरामीटर्स। सो दैट्स व्हाई आई कैन से आरओसी मतलब इसका रीजन, मतलब जितना भी वैल्यू है वो लाई करेगा एंटायर जेड प्लेन पे एक्सेप्ट जेड इक्वल टू जीरो एंड जेड इक्वल टू इंफिनिटी। समझ में आया? यस सर, यस। Okay, so I am going to conclude the session right now, and next class we will discuss about how to find out the ROC as well as what are the properties of Z transform. Okay, I am going to conclude the session, huh?
Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay. 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 Thank you all. So I'm going to conclude. I'm in the meeting. Huh? Thank you.